हाय सो हम लोग इस वीडियो में ऐसा कुछ थीम कलर बनाने वाले हैं अपने एक स्मॉल रिएक्ट एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन दिस गियर आइकन, सो दिस थिंग इज शोइंग। और इसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज हो रहे हैं। सो देखते हैं कि कैसे हम इसको रिएक्ट ऐप में बना सकते हैं, एक स्मॉल प्रोजेक्ट। आई विल ट्राई टू मेक इट। सो ये मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप है। इसके बाद आई जस्ट डिलीट दिस ऐप। और CSS के लिए हम यूज करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट को। तो आई जस्ट इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट। स्टाइल कंपोनेंट। तो क्या, तो ये हमारा स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। और हमें कोई CSS नहीं चाहिए अभी के लिए। तो in app.css we will delete all the CSS, whatever CSS we have, and simply I just do margin uh, 0 and padding also 0. So next thing what I will do, uh, तो ये हमारा स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है। तो लेट्स build the components. So first of all I just made a components, and यहाँ पे um, यहाँ पे हम करने वाले हैं custom hooks. So in this custom hooks, new file. So I just want to create a custom hook. So for that, what I will do, I just make a color context .js, and यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड है। तो I just copy paste the code, and I just want to explain कि क्या यहाँ पे होने वाला है। So this is my import, create context, use context और use state हमने React से लिया है। तो सबसे पहले क्या किया हमने हमने क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट हमने किया है। तो ये हमारा कलर कॉन्टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमने एक प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाया। प्रोवाइडर कंपोनेंट में ये चिल्ड्रन है। तो ये जिससे मैं इसको रैप कर दूंगा तो उसके सारे चिल्ड्रंस में हम इन सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक प्राइमरी बनाया, सेट प्राइमरी बनाया, और ये हमारे कुछ कलर्स हैं। ओके। एंड ये हमारा एक फंक्शन है सेट कलर, जैसे कि हम अपने इस कलर में इसमें कोई भी कलर सेट करेंगे। And in last, color context dot provider. So here I just want to show color context dot provider. So इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी कलर को, यहाँ पे सेट कलर को, और यहाँ पे हम अपने कलर्स जो हमारे एरे ऑफ कलर्स हैं उनको मैं यहाँ पे एज ए प्रोवाइडर मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक कस्टम हुक बनाया फॉर द कॉन्टेक्स्ट। सो इसमें क्या किया, मैंने यूज किया यूज कॉन्टेक्स्ट को, जो कि मेरा आया है रिएक्ट से। तो यूज कॉन्टेक्स्ट, एंड इसमें मैंने कलर कॉन्टेक्स्ट को क्या किया है, इस कलर जो मैंने क्रिएट किया था कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो आई कैन एक्सेस एनीवेयर यूजिंग यूज थिंग। तो अगर अब मुझे इसको कहीं पे यूज करना होगा तो सिंपली हाउ कैन आई यूज दिस, आई जस्ट राइट कॉन्स्ट थीम इक्वल टू यूज theme, and this is how I can use my uh, this custom hook. Simple. I just need to import it from this folder. So ये मेरा सिंपल सा है। उसके बाद लेट्स इंस्टॉल npm start. It is showing like that. Yeah, it is installed actually. So it will give me complaint. तो मैं इसको y कर देता हूँ। तो या think I don't have anything in my app.js. So first of all हम क्या करेंगे, हमने हमने क्या किया, हमने स्टाइल कंपोनेंट को यूज किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, const wrapper and style dot div, एंड स्टाइल डॉट div के बाद स्टाइल को हम इंपोर्ट करेंगे। स्टाइल को इंपोर्ट कहाँ से करना है हमको, स्टाइल कंपोनेंट से। तो वी कैन नॉट इंपोर्ट लाइक दिस।
उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, स्टाइल. So import style from the, and instead of this one, I just write here wrapper, and I will remove this class. I don't need this class. तो ये तो हमारा हो गया रैपर. सो इस रैपर की हम हाइट दे देते हैं 100 ph, एंड विड्थ को कर देते हैं 100 VW. तो या now we will make more components. So components like COM components 1.js, RAFC, or we can say RAFCE. So export default will also come. So this is my components one. So same, I will make one more component, component component 2.js. So RAFCE, एंड ये मेरा बन गया कंपोनेंट 2. अब मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, तो लेट्स इंपोर्ट इन आवर रैपर. तो component component s and component 2. So these components are here right now. So इनको मैं क्या करता हूँ, h1 बना लेता हूँ, एंड इसको भी मैं h1 बना लेता हूँ. तो ये मेरे दो कंपोनेंट्स आ गए. अब हमें कुछ ऐसा कलर पिकर डिजाइन करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं. तो वो कंपोनेंट रहेगा मेरा कलर पिकर डॉट जेएस. तो ठीक है, RAFCE. अब हम बनाते हैं कलर पिकर. तो कलर पिकर कैसे बना सकते हैं? सो दिस इज माई कलर पिकर. सो इन ऐप डॉट जेएस कलर पिकर. तो कलर पिकर, आई थिंक आई नॉट इनपुटेड. या सो कलर पिकर भी हमारा आ गया. अब हमें क्या करना है अपने कलर पिकर में? सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ ऐसा एक सर्कल बनाना है. ओके, सो अगेन आई जस्ट राइट हियर wrapper, and I just create something const wrapper style dot div. तो ये हमारा हो गया रैपर. सेम जेट, सेम मुझे दो तीन कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि एक हो गया सर्कल, और एक को भी कमेंट कर देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो ये हमारा हो गया कलर पिकर. सो लेट्स सी हियर, style is not defined. Yeah, so style is not defined. That's mean ये है मेरा स्टाइल, और यहाँ से मुझे ये हटाना है. सो एवरीथिंग लुक्स करेक्ट. तो अब हम रैपर बनाते हैं. अब रैपर में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है. एक सर्कल, तो ये सर्कल यहाँ पे इसकी कुछ हाइट दे देते हैं 2 rem, एंड इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं 2 rem. तो डॉक्यूमेंट, एंड कुछ अभी के लिए बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जो कि लेट्स सी ब्लैक, एंड सम बॉर्डर रेडियस 50% for circle. Yeah, so we have created this circle. Now this is my wrapper. So this is my circle. This is same circle like this. Now when I will click, so this thing will open, this div will open. So we have to make this div. So here I will say I have already made a component, not component, a wrapper. So this is my color wrapper. Inside this color wrapper, what I will do, so display flex and flex wrap
wrap, and so we will show 1 2 3 4 5 5 into 2 10 rem, and so width going to be around somewhere 12 rem, and इसके बाद हम करते हैं height. Height, okay, no need of height, so it will take. So अब हमने सबसे पहले हम चलते हैं अपने कलर कॉन्टेक्स्ट. कलर कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं हम? सी हियर, आई जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिग. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हमें अपने इसको यूज करना है. आई टोल्ड यू कि वी कैन यूज दिस थिंग. सो इन वी विल गो हियर एंड वी विल कॉस्ट थीम इक्वल टू यूज थीम. नाउ मुझे इस यूज थीम को इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पे दो आ रहा है, एक स्टाइल कंपोनेंट से, एक कस्टम हुक. तो मैं अपने कस्टम हुक से इसको इंपोर्ट कर लूंगा. नाउ व्हाट इज दिस थीम? सो दिस थीम इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, प्राइमरी कलर, सेट कलर एंड कलर्स. तो हम इन सबको एक्सेस कर सकते हैं. तो आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी, थीम एंड कंट्रोल वी. तो हम यहाँ से प्राइमरी कलर और सेट कलर फंक्शन जो हमारा है, और यहाँ पे हम ये कलर्स को कर सकते हैं. तो ये हमारा रैपर हो गया. अब इस रैपर को हमें कैसा रैपर बनाना है? तो ये एक सर्कल हो गया और ये एक डिव है. तो डिस्प्ले तो सबसे पहले फ्लेक्स करना पड़ेगा. डिस्प्ले लाइक दैट, flex, carefully flex. Okay, so I just make format document. So display flex रहेगा, and ये हमारा रैपर है, यहाँ पे सर्कल है. इसके बाद हमने क्या बनाया? हमने बनाया कलर, कलर रैपर. Yeah, so in this color wrapper what I will do, we will so this colors is nothing but a array, correct? So I will do one thing here. I will use colors, color colors. If colors is present, then map it. So how we will map? We will just say ki, okay, this color will come, and not this one. And again I just put here circle. So this circle uh, I can do directly. Yeah, so format document. So what will happen? Cannot destructure property of primary color of. So I'm getting error. Why I'm getting error? Use theme. Cannot destructure property of primary color of 0. Primary color. So what is the issue? Cannot destructure it. Is it coming from here? Okay, so colors is not defined. So okay, so color is here. Colors COL colors, ये मेरा वैल्यू है. ओके ओके, सो वी हैव डन वन मिस्टेक हियर. तो वो मिस्टेक क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कलर कॉन्टेक्स्ट. सो यहाँ पे जो मैंने ये प्रोवाइडर बनाया है, दैट प्रोवाइडर इज नथिंग बट दिस कलर प्रोवाइडर. इसको मुझे अपने index.js से रैप करना पड़ेगा. सो वी विल गो हियर, या, एंड इसको फिर हम इंपोर्ट करते हैं. Then we are able to access. Now color is not defined. So color is not defined from where? Okay, so color we are using here in color picker. Okay, so this is my colors and this colors. Yeah, now we are getting this thing. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 colors are here. So going here in color wrapper, so we will give some gap. So gap will be nothing but 0.3 rem. Yeah, so we will get some gap here, and here also I will give some gap. So that is nothing but 0.5 rem. Format document. Okay, so now
we just achieved this thing. Now we have to fix it at last. So how we can fix this? So, but before that, here we are getting this color, and I will pass this color. So in style component, we can pass this color. So in circle, uh, here this background color. So this background color, what I will do, I will use dollar curly braces. After that, I will I will made a function. So inside this, I will take this as a prop. So what prop I have passed here? Color. So here we will take this color, and here I will pass the color. Okay. So see, I'm getting all the colors, but one color is still missing. So if I don't have any color, then I will do black, and this black is in string. So okay, see, yeah, yeah, you can see here. So now we are getting this thing. Now what I will do, I will also make a function here. So why function? When I will click this thing, then my primary color should be changed. And how I can change my primary color? With the help of set color. So if तो एक फंक्शन फटाफट बनाते हैं const handle color. So handle color change, and in this, or I don't need to do this thing separately. So in this circle, when I will click on this circle, so I'm getting this set color, correct? So I just give a on click and a callback, and inside this I just pass this set color, and this color I will pass here. All right. So yeah, primary color, set color, I don't need right now, I don't need this primary color, or I can use this primary color here, color primary. Yeah, so primary color is something right now, something this color. So yeah, now we will fix this thing uh, like this. So when I will click, then it will show, otherwise it will not show. So for that, what I will do in my app.js, here, this is my color picker. So I will make a color picker wrapper, and format document, Control C, Control Shift Alt, and I will use this thing. I don't want this thing, and the color picker wrapper. So first of all, I just want this thing position fixed. Okay, so position going to be fixed. Now position is my fixed, and from where I want this position will go. So position will go bottom 0, and right 2 rem. Is it fine? Almost 2 rem. Why 2 rem? I can give 1 rem here, so it is fine. Yeah, so fine. Or I can, from bottom I can give 1 rem also, which looks little upper. I can do also here, but right now I'm trying to do this in bottom side. So here what I will do, so I don't want to show everything here in initially. So for that, what I will do, I will just transform, and I will use translate X, and I will give 100%. Let's see what will happen. So when I'm giving 100%, it is going. Uh, so from right, I'm giving 1 rem. Because of that, it is showing. So oh, sorry. So yeah, you can see here it is hiding totally, but I don't want to hide completely. Let's see what will happen when I will do 80%. Okay, so in 80%, it is also showing. So I have to fix this thing. So from right, I will take 0, and from bottom, I will make it 2 rem.
Okay, still I'm able to see. So I need to give here 85%. Yeah, now looks good. 84%. Yeah, so now this looks good. Okay, and when I will click on this thing, this color wrapper, so what will happen? It will change. So I will just here make a const so set show, and here I will use state, and initially it is false. I don't want to show it. And again, same thing here I will do. What I will do, I will pass this color picker wrapper, this show. Okay, so this show is nothing but a boolean value. And when I will click on this button, so what will happen? So it will set so. What it will set so? Previous value. I just toggle. If it is true, then it will false. And it is false, then it will true. So I have already passed this thing. So I will pick up here. So how I can pick up? So control shift down arrow. I just comment this thing right now and transform translate X. So instead of this thing here, uh, uh, form again this dollar curly braces and then a callback. Okay, so here what I will use this so. Okay, now here I use backtick translate and dollar curly braces show. If show, then use 0%. Otherwise, don't show. So if don't show, then sorry, if so, then 0% we will do. Otherwise, when we have to hide, then we will use 84%. All right. So yeah, and also I give some transition here. So transition, no, transform transition. So all 0.3 second is. Yeah. So now let's see what happened. Okay. So it's working. Can you see when I'm clicking on it, it is showing. Now what we have to do now we are going in component one. So here what I will do const theme is equal to use theme. Okay. And use theme I will import. I will import from the custom hook. So this thing I will import. So theme, use theme, and from here I want this primary color. What was that? Color context, primary color, control C. So here I will show control V. So this primary color I will show here. So simply style uh, color, and I will put this primary color. All right. And this is my component one. Okay, so I just copy this thing and I will paste uh, here component 2 and control tab, control C. Again, I will show here and I will import it. Yeah, all right. So primary color is not defined. Where it is not defined? Defined everywhere. Okay, so see, now things are changing. Can you see? All right. And so currently you can see here when I'm using this, so this color will, so instead of this color, you can use any icons here. Like I have used this icon gear. So you can also use this icon React icons. You can use React icons and you will go here. And from here, you will search a gear and you will get this gear. But before that, we have to import. We have to install these things. So let's install, or you can. So you can install it. I will add it in my GitHub. Then you can check it also. No problem. So yeah, that's all for today. So I hope you got it
what we have done. So this is my component 1 and this is my component 2. So from here, when I will clicking this will show, and from here I will just changing the color again and again. So you can get this thing on my GitHub. So I just make it big. github.com, github.com, and here. So here what you get a theme provider for React application. So here I have all my code here. I also ping in my description, and here also you will get the deployed version. So here I made already, so you can see. Yeah, that's all for today. Thanks.